नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आजकल बहुत ही ज़्यादा फोकस में है, स्पेशली आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ 76,000 करोड़ वर्थ PLI स्कीम। तो आपकी जानकारी के लिए कि जो भी स्टॉक्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इन इंडिया विच आर लिस्टेड, तो दे हैव शोन a run up of at least 50 to 100% after the government has announced this PLI scheme. तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ विच इज़ related to this semiconductor industry and which can prove to be a multibagger. And एक और जानकारी दोस्तों कि most of the stocks जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है विच आर राइट नाउ लिस्टेड इन इंडिया, दे हैव वेरी पुअर फंडामेंटल्स। तो अब उन स्टॉक्स ने दे हैव शोन दिस 50 to 100% रन अप, बट जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस स्टॉक के फंडामेंटल्स आर वेरी गुड and it is and you are getting that stock at a very attractive price also. And so let's go and see what we have right now in front of you. के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसका मार्केट कैप है जस्ट 1411 करोड़ रुपीस and current market price of 385, and this is almost very close to its अपना 52 week low, and on top of that ये जो शेयर है is also very close to its listing price. And fundamentals के बारे में डिस्कस करें तो we are getting this share at a PE of 23.5 and it has a book value of 104 rupees. The promoter holding in this share is 74.5, which is a very good plus point, and 0% share is pledged. The ROCE and ROE figures are very impressive and बिल्कुल ही बहुत ही कम डेब्ट है इस कंपनी के ऊपर, विच इज़ अराउंड 65.7 करोड़ रुपीस। सो चलते हैं इसकी प्राइस एक्शन पे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका प्राइस एक्शन, ये स्टॉक हाई लगा के आया है अराउंड 547, इट इज़ बीइंग शोन ओवर हियर, बट एक्चुअल में जो हाई है इट इज़ अराउंड 569 रुपीज़, और फिर इस स्टॉक ने रिवर्स लिया अराउंड 341 रुपीज़ से, एंड इस शेयर का लिस्टिंग प्राइस भी इज़ ऑल्सो अराउंड 340 रुपीज़, which I'm not exactly sure about, but it is around these levels only. And देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स आर वेरी गुड. The sales, if we see year on year, has been consistently increasing. Okay, जस्ट ओनली एक ही ईयर था 2019 जब इसके सेल्स फिगर थोड़े ऊपर थे, बट उसके बाद से it has been consistently performing. And operating profit margin, which is the major point over here, operating profit margin जो है इस कंपनी का has been increasing consistently. So
इट हैज़ कम टू अराउंड 32%। फंडामेंटल डिटेल्स में जाएंगे इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इसके मेनली ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है उनमें मेन है HMDS एंड CMIC। यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इसका पोर्टफोलियो जो है, जब प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से 50% जो रेवेन्यूज है दोज आर कमिंग फ्रॉम HMDS। So this is the chemical we are going to talk about, which is going to be a crucial chemical in the अपना semiconductor industry. और on top of that, this chemical has been widely used in pharmaceutical industry also. तो एंड दूसरा जो केमिकल है दैट इज CMIC। इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो 35% हैं of the total revenues, and it has increased from the previous year. And अगर HMDS का देखें तो that is stable at 50%. So there is one more type of chemicals in which they are dealing, that is oil well completion chemicals. तो ये जो ऑयल वेल होता है अपना जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, तो ये केमिकल्स उनमें यूज़ होते हैं उस ऑयल वेल को कंप्लीट करने के लिए। सो दे हैव रिड्यूस देयर स्टेक द रेवेन्यू फिगर्स फ्रॉम 33% to 13% इन दैट। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑयल वेल बिजनेस जो है वो आगे आगे धीरे धीरे जाके डिप्लीट ही करने वाला है, इसीलिए इन्होंने दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू द मोर प्रोडक्टिव सेगमेंट। तो इसका जोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो 71% जो है दैट इज़ डोमेस्टिक, जो कि 60% था FY 2020 में। एंड इंटरनेशनल जो है वो 29% है 21 में, विच वाज 40% इन FY 20। तो इसका जो है जो एक्सपोर्ट्स हैं वो USA, कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, UAE, ऑल ओवर द इंडिया। So this is the major thing which we are going to talk about. ये जो HMDS है, इस कंपनी का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है HMDS में वो 10% है। 10%, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। एंड इसमें से हार्डली एनी HMDS इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया। तो सारा का सारा ग्लोबली ही सप्लाई होता है। एंड जो CMIS है इसका 40% मार्केट शेयर है। तो व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट इज HMDS और उसका जो आगे फ्यूचर है। तो क्लाइंटेल देखेंगे तो कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड लॉरस लैब्स, औरोबिंदो, CC ग्रैन लिमिटेड, लायबिलिटी कंपनी, विवन, हेटीरो। तो ये टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सारी गुजरात में है। तो 4800 मेट्रिक टन्स ऑफ HMDS एंड वॉल्यूम रिएक्टर कैपेसिटी ऑफ 190 किलोलीटर्स। और CMIC भी 3200 मेट्रिक टन्स है एंड वॉल्यूम रिएक्टर कैपेसिटी इज 122 किलोलीटर्स। तो इसके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं विद वॉल्यूमेट्रिक रिएक्टर कैपेसिटी ऑफ 251 किलोलीटर्स। द प्लांट विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ pharma intermediate chemicals. The expected year for the commissioning of the plants is FY 23। तो FY 23 के बाद हम इसमें इसके रेवेन्यूज़ में और जंप देखने वाले हैं। एंड ऑल ऑफ दिस एज पर द कॉन कॉल ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग फंडेड बाय द इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो कुछ इन्होंने डेप्ट नहीं लिया है, कुछ इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। तो इसका जो IPO आया था 300 करोड़ रुपये, 318 करोड़ रुपीज़ का आया था एट अ प्राइस ऑफ 340 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो दोस्तों अभी यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज़ दिस HMDS केमिकल, है ना। तो HMDS के बारे में आई टेल यू एंड व्हाट इज़ द यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ओके, so now we are going to the website of Chemcon speciality।
तो इसमें आप जाएंगे, अब हम जाएंगे सिलेन उसके उसमें। तो सिलेन जो प्रोडक्ट है दो तो HMDS का फुल फॉर्म सो डाइसैलिसिन। So organosilicon compound with the formula, this volatile colorless liquid is used as a solvent and as a reagent in organic synthesis. तो HMDS and HMDSO। सो इसके अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो सिलेंस जो हैं, तो एप्लीकेशंस में जाएंगे, तो इस एप्लीकेशन में जाएंगे एंड देन वी कैन सी ओवर हियर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। Petroleum, rubber, electronic HMDS, coating, cosmetics, silicon, oil field and pharmaceutical. So इधर भी यहाँ पे भी हम जाएंगे इनकी साइड पे, तो we can see we are a manufacturer of specialized chemicals such as HMDS and CMIC, which are predominantly used in pharmaceutical industry and in organic bromides, namely calcium bromide, zinc bromide and sodium bromide, which are predominantly used as the completion fluids in the oil fields industry. So we should not be worried about all this bromide chemicals because they are reducing their focus into this oil field well completion business. So we were the only manufacturer of, so देखिए we were the only manufacturer of HMDS in India and were the third largest manufacturer of HMDS in the terms of production. Okay, so this is the third largest producer of HMDS in the whole world. That is huge, and the only manufacturer in India. Acylazine, HMDS in short, which is quite easy to say. So it is a bulk organo silicon compound being a quite useful silanizing agent. तो ये silanizing agent होता है, तो it is a reagent for the preparation of trimethyl silyl derivatives. तो बेसिकली मैं इन लेमन्स टर्म बता दूँ, इट कैन बी यूज फॉर साइलिनाइजिंग द सरफेस ऑफ सिलिकॉन वेफर। तो जो भी सिलिकॉन वेफर होता है, जो दैट ग्रीन कलर ऑफ जो वेफर होता है जिसके ऊपर सारी प्रिंटिंग होती है ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो उस सब प्रिंटिंग प्रोसेस से पहले उसको कोटिंग किया जाती है उसकी विद द हेल्प ऑफ HMDS। अगर वो कोटिंग नहीं करेंगे तो जो फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस है ना, तो दैट प्रोसेस कैनॉट बी डन प्रॉपरली बिकॉज दिस एक्ट्स एज ए इंटरफेस अपना on the chip so that this photography can be done. So and even on this neutral website you will see the global HMDS key players include this Zin Yaqiang, Silicon Chemistry, Zhejiang. So all of these are the suppliers from the China. Okay, so China is the largest market with a market share of about 55%, followed by Europe and USA. तो इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में HMDS यूज होता है तो दैट इज 99% प्योरिटी। एंड अदर यूजेस ऑफ दिस HMDS इज जो SEM फॉर स्कैनिंग, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके यूज से पहले इस लेयर से HMDS से लेयरिंग की जाती है। and other major use is in pharmaceutical industry. So here is the list of best players, key players
listed in HMDS. So here we are, Chemcon Specialty Chemicals Limited, which comes at number 2 in the world. That is a huge thing. So it is one of the third largest producer of HMDS in the world. So application of HMDS, as we can say, is semiconductor processing, pharmaceutical intermediate, organic synthesis, silicon rubber, and others. And as we know that semiconductor market is growing at a very fast rate, and once this industry hits Indian market, it is going to be a huge opportunity for this company. And because there is no other manufacturer, not even the supplier, there is no other manufacturer of HMDS only in India. So that is going to be a game changer for this company. So I was listening to their investors conference. In that ये लोग बोल रहे थे the management कि हम लोग जो हैं अपना HMDS जो है, that is majorly they are giving only for the pharmaceutical industry right now. Okay. So then the reason the management said was because till now the HMDS which is being manufactured in India is not yet authorized to be used, is not yet authorized to be used in the semiconductor industry, but the management is working on that, and they are quite sure that they are going to break into the semiconductor industry. And on top of that, once the semiconductor industry hits the Indian market, so this will be the sole provider, that is for sure. And उसके बाद अगर हम बात करें इसका Chemcon specialty के जो हैं, what is the reason why are we getting this stock at near its 52-week low? So I'm not going to hide anything from anybody. So everything so इतने positives होने के बाद भी ये share right now we are getting at very fair valuation. So इसका reason क्या है वो मैंने find out किया है. So let's go to that. This company got a notice from Gujarat Pollution Control Board, GPCB भी बोलते हैं इसको, in September 2021. तो जिसकी वजह से कि प्लांट क्लोजर का इनको नोटिस मिला था. सो आई वेंट थ्रू ऑल द डिटेल्स, जिसकी वजह से ये प्लांट अराउंड 40 to 45 डेज बंद रहा है. I went through their investors conference and the reason of the plant closure. So everything has been finalized, and तो conclusion जो निकला है as per the investigation report, इनका कोई transporter था who was carrying HCl. HCl is not even their main product, and it is one of the byproduct of their industry. So they hardly produce around 500 metric tons of HCl. So that transporter was carrying HCl, and the tanker in which he was carrying was not properly cleaned. So so it was all contaminated. So it is not the mistake of the Chemcon specialty company, because the contamination which was being found in the tanker is not even those kind of chemicals are not even produced. Contamination was found with the phenol, I guess, and that chemical is not even, there is not even a single trace of that chemical in the whole plant of Chemcon specialty. तो इसके बाद जो है अपना the plant has reopened in the October end, but it is still under observation. They are running at the full pace. There will be a review by the GPCB on the completion of 3 months, and thereon the restrictions will be reduced, and after 6 months it will again be reviewed, and all these restrictions will be completely removed.
once they are sure that everything is fine with the company. So presently the plant is running at the 100%, but still there might be some negative bias, or sometimes the operators and everybody, they keep the stock price down, and this stock is not even in the limelight. So that might be the reason for such great valuations. So investors, we are getting this stock at almost its IPO price, and this company has grown a lot after that. So basically we are getting this company at a discount. I wanted to make this video when the stock was at around 360 to 365. It was consolidating in this price range for quite a long time, but I didn't have the means to create a video. But finally I decided, and still I think this stock is at a very good valuations. So I would recommend a buy on this stock, and one should buy aggressively. And one more disclosure, that I am myself owning this stock. I have bought the stock in the price range of around 360 to 365, and I am not a SEBI approved personal who can give you any recommendations. So I just wanted to share my knowledge on this stock. So it is up to you that if you want to buy this company or not, but this can, in my view, prove to be a multi-bagger share in the future. Thank you very much. So guys, this was all my viewpoint about Chemcon Specialty Chemicals Limited. So if you find this video useful, please do share with your friends and other fellow investors so that they can also be benefited, and press the like button, and if possible please subscribe my channel, because I'm going to get many more videos like this in future. Thank you very much. Signing off, Gagandeep Singh.